व्यासोवाच वरदानमिदं दस्येदानवश्ये शिवार्पितं मत्यद्भुततरं राजन् शृणु तत्प्रब्रवीम्यहं तस्य देहाद् रक्तबिन्दुर्यदा पतति भूतले समुत्पतन्ते ते या सद्रूपा तत्पराक्रमाः असङ्ख्याता महावीर्या दानवा रक्तसम्भवा प्रभवन्ति ते रुद्रेणादत्योस्तद्भुतो वरः सतेन बलदानेन दर्पिता क्रोधसंयुता अभ्यगातरसा शङ्खे हन्तुं देवीं सकालिकां तादृशा वैष्णवीं शक्ते गरुडोपरि संस्थितां शक्त्या जघानस्तामयि कमललोचनां गदया वारयामाशा शक्ति सा शक्तिसंयुता आदादे चक्रेण रक्तबीजं महासुरं रताङ्गहतदेहातु बहुसुस्रावशोरिणं वज्राहतिकरे सिंहानिर्झरा इव गैरिका यत्र यत्र यदा भूमौ पतन्ति रक्तबिन्दवः समुत्थस्तु तदाकारा पुरुषा च सहस्रशः ऐन्द्रितमासुरं घोरं वज्रेणाभिजगान च रक्तबीजं क्रुधाभिष्टा निशसार च शोणितं ततस्तक्षत जाता ततस्तक्षतजाता रक्तबीजा हिनेकषा तद्बीजा च तदाकारा सायुधा युद्धदुर्मदा ब्राह्मणी ब्रह्मदण्डेन गुप्ता हृदतप्रसममाहेश्वरे शूलेन धारयामास दानवम् नरसिंहेन घातैस्तं बिभ्याद महासुरम् आहन तुण्डघातेन क्रुद्धा तं राक्षसाधमं कौमारी च तथा शक्त्या भक्षस्येन तामतारेत्वपक्रुद्धो सरासारेर्वेदविशतैः सदा गदाशक्ति प्रहारयस्तु मातरे सर्वा पृथक् शक्तस्तं सराघातैर्विदो सर्वकोपिता तस्य शस्त्राणि चिच्छेदा चण्डिका स्वसरेशितैः जघानैषे जघिषे देवी कुपितापृशं तस्य देहाजशुस्रावरिधरं बहुधातु यद तस्मात् सा शूरा प्रादुरासन महासहस्रसा रक्तबीजैर्व्याप्तो हृदरोगो समुद्रै सन्नद्धैः सायुधैः कामं कुरुभिर्मद्भुतं पररन्तः चान्दृष्ट्वा रक्तबीजानेकशा भयभीतासुरास्त्रेषुर्विहरणासु कर्षिता कथमध्ये चयं दैत्या गमिष्यन्ति सहस्रशा महाकाया महावीर्या दानवा रक्तसम्भवा एकैव चण्डिकास्त्रासि तथा काली च मात्रा एताभिर्दानवा सर्वे जेतव्या कष्टमेव तद् शुम्भो वा सा बलसम्भृता आगमिष्य सङ्ग्रामे ततो नर्थो महान् भवेत् राजोवाच एवं देव्या भयोद्विग्ने चिन्तामापुरमहत्तरं तदा तदाम्बिका प्राह कालीं कमललोचनां चामुण्डे कुरु विस्तीर्णं वदनं त्वरिताभृशं मत्स्यपाशम्भूतं रुद्रं तव सत्वरा भक्ष्यन्ति चरणे दानवानन्दकामता निश्यामे शरीरगदाशे मुसलै तथा कुरु विशालाक्षी पानं तद्वृतस्य च पुन्मातं यथा भूम्यां न पतेत वे साम्प्रतं भक्ष्यमाणा तथा दैत्यानाजत्वसन् चापरे मेषां क्षयो नूनम् अपैष्यत् न चान्यथा गाथयिष्याम्यहं दैत्यं त्वं भक्षये च सत्वरा पिबन्ति सततं सर्वं यातमानादिसंशये इत्थं देशं कृत्वा दत्त्वा राज्यं सुरालयम् इन्द्रासुतं सर्वं गमिष्यामो यथा सुखं व्यासोवाचुक्ताम्बिकया देवी चामुण्डा चन्नविक्रमा प्रवोचा सिद्धं सर्वं रक्तबीज शरीरजं अम्बिका तं जघानासु खड्गेन मुसलेन च चखाददेहा देहस कलां चामुण्डा तां क्षोतरी शोभक्रुद्धो गदाघाते चामुण्डां समघाते तापि सा भावासु छद्रं तं भक्षयत् येने रुद्रजा गौरा रक्तबीजा महाबला तेऽपि निष्पादिता सर्वे भक्षिता गतशोणिता कृतमा भक्षिता सर्वे यस्तु स्वाभाविको सुरासो प्रभावितो हत्वा खड्गेनाते विखण्डिता रक्तबीजे हते रौद्रे ये चान्ये दानवारणे पलायनं तदा कृत्वा गतास्ते भयकम्पिताः देवदोस्तन्ते शुभं तोचो सुला रुद्रा रक्तदेहा च विगतास्त्रा विचेतसा राजनम्बिकया रक्तबीजोषो विनिपादिता चामुण्डा तस्य तो पपो सर्वं च शोणितं ये चान्ये दानवा शूरावाहनेनाते रङ्घसा शृङ्गेनान्यता सर्वे काल्या च भक्षिता परे वयं तां गतं राजन्नागता यथेष्टं चरितं च तथा तेभ्यः सङ्ग्रामे परमाद्भुतम् अजेयं महाराजा सर्वथा ते दानवे गन्धर्वासुरयक्षेशे पन्नगोरगराक्षसैः अन्या तत्रागता देव्या इन्द्राणी प्रमुखा युध्यमाना महाराजा वाहनैरायुधैर्धा ताभिः सर्वं मदं सैन्यं दानवानां रायुधैरग्भ्यो विभाजेन्द्र तरसा विनिपादिता एका विदुषः देवीं कुनस्ता विरन्नता सिंहोऽपि हन्त सङ्ग्रामे राक्षसान्मितप्रभा अतो विचार्य वैरुक्तं सदधीयतां वैरमया युक्तं सन्ध्रैव सुखप्रदा आचर्मेदखिलं यन्नारी हन्ति राक्षसान् रघुबीजोपेन यथा पितं प्रीतं दस्यापि शोणितं
अन्ये निपातिता दैत्या संग्रामे मिकया नृपा चामुण्डया च मांसं मे भक्षितं सकलं रणे वरं पातालगमनं दस्यासेवा तवा वरा तं न तु युद्धं महाराजा कार्य मम्बिकया सा नारी प्राकृता एषा देवकार्यात् साधने मायें प्रबला देवी क्षपयन्ती यमुत्थिता व्यासोवाच तेषां वचस्तस्यं श्रुत्वा कालविमोहिता मुमूर्षो प्रत्यवाचेतं शुम्भा प्रस्फुरिताधरा शुम्भोवाच एवं गच्छत पातालं शरणं मा भयातुरा निश्याम्यः मध्ये वेताञ्च ताश्च समुद्यता जित्वा सर्वान् सुरानाजो कृत्वा राजं सुस्कलं कथं नारे भयोद्युग्ना पातालं प्रविशाम्यहं नेत्रे पार्थान् सर्वान् रक्तबीजः मुखान्तरणे प्राणतारणाय गच्छामि त्वा किं विपुलं यशा मरणं सनिवार्यं मे प्राणानां कालकल्पितं तद्भयं जननोत्पातं तजेत् को दुर्लभं यथा संज्ञाहं गमिष्यामि रथारूढो तृणाजिरे तत्त्वात् नामागमिष्यामि नागमिष्यामि चान्यथा तं तु सेनायतो वीरः पार्श्वग्राहो भोष्य मे तरसा धाम सनयस्तेषेण नारीं यमालये शुम्भो उवाच अहमद्य हनिष्यामि गत्वा दुष्टांश कालिकाम् आगमिष्याम्यहं श्रीघं गृहीत्वा तामथाम्बिकां मा चिन्ता कुरु राजेन्द्र परागाया सुकारणे क्वैषा बालाकमे बाहुर्वीरं विश्ववशङ्करं दग्धार्तिं विपुलां भ्रातरमुक्षं भोगाननुत्वाम् आनेष्याम्यहं कामं मानिनीं मानसंयुताम् मयि देशे ते राजनयुक्तं गमनमरणे गत्वा अहमानेष्यामि तपार्थै वैजयश्रियं व्यासो वैद्युक्ता भ्रातरं ज्येष्ठं कानीयान् फलगर्भितार्थमासाय विपुलं सन्नद्धा स्वफलाप्रदाः जगां दर्शा तूर्णं सङ्गरे कृतमङ्गला संस्तो बन्धुसौते च सायुधाश परिष्करा श्रीमन्दे भागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां पञ्चमस्कन्धे एकोनत्रिंशां तत्सत् व्यासोवाच निशुम्भो निश्चयं कृत्वा मरणाय जयाय वासोद्यमा सबलासुरो रणे देवीमुपाययो ताजगाम शुम्भो ताजगाम तमाजगाम सिंहोऽपि सुबलेन समावृता प्रेष्यो भूतरणे राजा संग्राम रसपण्डिता गगने संसृता देवादुधा गगने संस्था देवा तथा पटला पटा दृक्षवस् संग्रामे सेन्द्रा यक्षगणास्ता स्मोतरणे दत्ता धनुराधाय सार्गं चकार सर्वेष्टिं सा वेशेन जगदम्बिकां मञ्जन्नं सरजालानेन सम्भं चण्डिकारणे वीक्षादाया धनुशेषं जास सुसुरं मुहुः वाचिकालिकां देवी पश्य मूर्खत्वमेत्यो मरणायागतौ कालीमसमीपमिहाधुना दृष्ट्वा देवतं घोरं रक्तबीजात्यं तथा जयासां कुरु तस्त्वयतो मोहितो मम माया आशा बलवती ईशा न जहादनितं क्वचित् भग्नं मृतबलं नष्टं गतपक्षं विचेतनाम् आशावानिबद्धौ तो युद्धाय समुपागतो असन्तभ्यो मया काले ऋणे शुम्भ निशुम्भकौ आसन्नमरणावेतो सम्प्राप्तो मोहितो पश्यतां सर्वदेवानामनिष्यामहमद्यतो व्यासोवाचयुक्ता कालिकां चण्डीकरणाकृष्णसरोत्क्लेशादयामास तरसात् सम्भं पुरतासितं दानोऽपि सनासस्था शिच्छेदनिशते शरीरोत्परस्युद्धं बभूवाति भयानकं केसरी केशजालानि धन्नानासैनसागरं गायामास बलवान् सरसीं वारुणो यथा नखैरन्दपधारैस्तु दानवान् पुरशासनान् चखा चाभिषीर्णाङ्गान् गजानि उमदोत्कृतान् एवं वर्तमाने तु सैन्ये केसरिणा तथा अभ्यतावन्दिसम्भूता विकृष्टवर्गात्मकाः अन्योपि क्रुद्धा दैत्येन्द्रा देवी मन्दो वायु सन्दसरसनारक्नेता नैकसा तत्राजगां तरसा सम्भासेन समावृता नेत्रकालिकां कौपादगृहीतुं जगदम्बिकां तत्रागत्य ददः सा जाम्बिकां च पुरासनं रौद्रसयुतां कान्तां शृङ्गारसंयुताम् तां वीक्षुलापाङ्गीं त्रैलोक्यपरसुन्दरीं सुरक्तनयनां रम्यां क्रोधरक्षेषणां तदा विवाहेच्छां परित्यज्य जयासां दुर्दशा मरणे निश्चयं कृत्वा तस्तावाहितिकात्मका तं तथा दानवं देवीं विस्मृतपूर्वमिदं वचाभाषे शृणुतां तेषां दैत्यानां रणमस्तके गच्छध्वं वापराजूयं पातालं वा जलार्णवं जीवितासां विसरा कृत्वा तक्तैवावधानि च न अथवा मक्षराघात प्राणारणाजिने प्राप्य सर्वं सर्वे क्रीडन्तो विगतज्वरा कारकत्वं जसुरत्वं नाभूयत्येव सर्वथा ददाम्य अभयदानं मयि यान्तु सर्वे यथा सुखं व्यासो वाद्याकर्णवचस्य निशम्भो मदगर्भिता निश्चितं खड्गमादाय धर्म चैवाभ्र चैवाश्चन्द्रकं दावमानदर्शा हिनासिंहं मतोत्कं जघानाति बलान्मूर्धि ब्राह्मेण जगदम्बिकां तो देवी स्वगदया वञ्चेत्वापे जासिपातनं ताडयामास्तं बाहुर्मूले परशुना तथा खड्गेन नेता सोऽपि बाहुमूले महाविदा सन्तभ्यं वेदनां भूयो जघान चण्डिकां तदा सापि गण्डासनं घोरं चकारभेदं नाम पपौ पुनः पुनः पानं शृण्वन्तुमिच्छति
एवं परस्परं युद्धं भुवाति भयप्रदं देवानां दानवानां च परस्पर जय श्रीराम। फलादा पक्षिणा क्रूरा सारमेया जम्बुकानन्दोषात् सन्तुष्टा क्रुद्धा गङ्गाशपाय साधारण भूर्भाते भूयिष्ठः पादता सुरभस्मके रुद्रस्राव संयुक्तैर्गजास्ते सङ्कुला परितान् दानवान् दृष्टानि शम्भोते रुषान् पिता प्रयोचण्डिकां तूर्णं गदामादाय दारुणां सिंहं जघान गदयामस्तके मलगर्भिता वृद्धजासुतं कृत्वा पुनर्देवी मताढे साप्तं कुपता देवं सम्मं पुरता सम्प्रहरन्तं समीक्षाता देवी वचनमुपरे देव्यो वा तिष्ठमन्दमते तावद्यावत् खड्गमिदं तव ग्रीवायां प्रेरयाम्यस्मात् गन्तासीमसाधनं इत्युक्ता तरसा देवी व्यासो वाचिक्तुक्ता तरसा देवी कृपाणेन समाहिता चेदमस्कं तस्य संवस्यात् चण्डिका सच्चिन्नमस्को देव्या कबन्धो देवदारुणा वामचा गता पाणे त्रासयन् देवता गणाना देवी तस्य सतैर्बाणे चिच्छेद चरणो करो पपातोर्व्यां तथा पापे गतासु पर्वतोपमः तस्मिन् निपतते दैत्येन सम्मेभिं विक्रमे हाहाकारो महानासे तस्सैन्ये भयकम्पते त्यक्ता धान सर्वाणि सैनिका शता जाप्लुता जगुरों जगमुर बुम्बारों सर्वे कुर्वाणा राजमन्दिरं तानागतान् सुसम्प्रेक्ष्य ब्रह्माशत्रुंशूदना प्रत्सका शम्भोऽसौ कथं भगना पलायता तच्छ्रुत्वावचनं राज्ञस्ते प्रोचुः प्रणतापशं राजंस्ते नेतो भ्राता शेते समरमूर्धनि तया निपातदासूरा ये चातेऽप्यनुजानुगाः वयं तां कथितं सर्वं वृत्तान्तं समोपागता शम्भो निहतसत्ता तथा चण्डिकयाधुना नहेद्दस्य लोकालोद्यातौ राजनुराङ्गणे देवकार्यं समुद्देश्य कालपीयं परमाङ्गनादन्तं गयतुकलं नूनं प्राप्ते ते प्रचिन्ते नैषा प्राकृतयोरेष नैषा प्राकृतो सैव देवी शक्तिरुन्नतमा अचिन्त्य चरिता क्वापि दुर्गे या देवतैरपि नानारूपधरातीव मायामूल विशारदा विचित्रा भूषणा देवी सर्वधरा सुभागहना सूर्यचरिता कालरात्रिर्वा परा भारपारगा पूर्णा सर्वलक्षणसंयुता अन्तरिष्ठा देवास्तां स्तुवन्त्य कुटोभया देवकार्यञ्च कुर्वाणां श्रीदेवीं परमाद्भुतां पलायनं परो धर्मा सर्वथा देक्ष रक्षणं रक्षते किल देहेऽस्मिन् काले स्मतसुखताङ्गते गङ्गामिव जो राजन्विता तेन संसा काला करोति बलनं समय निदबलं क्वचित् तं पुनः च बलं कृत्वा जायोपादतारं याचकं काला करोति समये क्वचित् भिक्षुं धनदातारं करोति समयान्तरे विष्णुः कालवशे नूनं ब्रह्मा वा पार्वतीपति इन्द्राजानुसार्वे काले बभ्रुः स्वयं तस्मात् कालं प्रीतं तवाधुना तन्मुखो देवतानां च दैत्यानां नाशे हेतुकाय केवा कथनाशे कालस्य किल भूपते नानारूपधराभ्यस्ति ज्ञातव्यं तस्य चेष्टं कदाचित् सम्भोधनां कदाचित् फलयस्था उत्पत्ति हेतुः कालोन्यासे हेतुः सा प्राप्तलक्ष्यं ते महाराजा देवा सर्वे सभासभा करदासे कृता पूर्वं कालेन सम्मुखेन जातेनेव विमुखेनाद्याबलिनो बलमासुरा नियतानुतरां काला करोजा सुभासं नैवात् कारणं काले नैव देवा सनातना थाते रोचे जातगुरो प्रमेश्य जा कालोऽयं नात्र हेतुसे दानवानां तथा पुनः तदकृतो कथाचक्रो भग्नसङ्ख्ये तथा विष्णुः सारुद्रो वर्णो धनदोयमः तथा त्वमपि राजेन्द्र वीक्ष्य कालवशं जगत पातालं गसदर्शा जीवनभद्रामवाप्स्यसि मृते द्वयि महाराजा शत्रुवस्ते मुदान्विताः मङ्गलानि प्रगायन्तो विचरसन् सर्वथा श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां पञ्चमस्कन्धे त्रिंशां दशत व्यासोवाच इति तेषां वचा श्रुत्वा शुम्भो दैत्यपतिस्तथा उवाच सैनिकानाशु कोपाकुलितलोचनः शुम्भवा जालमाः किं ब्रूत दुर्वाचं कृत्वा जीवितमुत्सहे निहत्य सचिवान् भ्रातर्निर्लज्जो विचरामि किं कालः करता शुभानां वा शुभानां बलवत्तरः का चिंता मम दुर्वारे तस्मिन्निषेप्यरूपके यद् भवति तद् भवति यत् करोति करोतु तत् न मे चिन्तास्ति कुत्रापि मरणात् जीवनात् तथा सा कालोऽप्यन्यथा कर्तुं भावितो नेशते क्वचित् न वर्षति च पर्जन्या श्रावणे मासि सर्वथा कदाचिन्मार्गशीर्षे वा पौषे माघेत फाल्गुने अकाले वर्षति वासु तस्मान्मुख्यो न चास्यं कालो निमित्रमात्रं तु दैवं मे बलवत्तरं दैवे निर्मितं सर्वं नान्यथा भवतीत्यतः दैवमेव परं मन्येऽधिकपौरुषमनर्थकं जेताया सर्वदेवानां निशुम्भोऽप्यनया हतः
रक्तबीजो महाशूरासोऽपि नाशं गतो यदा तदाहं कीर्तिमुत्सृज्य जीवितासां करोमि किं प्राप्ते काले स्वयं ब्रह्मा पराधरद्वय संमिते निधनं याति तरसा जगत्कर्ता स्वयं प्रभु चतुर्युग सहस्रं तो ब्रह्मणो दिवसे किला पतन्ति भवनात् पञ्च नवचेन्द्रा तथा पुनः तथैव द्विगुणे विसुरमरणायोपकल्पते तथैव द्विगुणे काले शङ्करा शान्तिमेति च का चिन्ता मरणे मूढा निश्चले दैव निर्मिते महीधराणां च नासा सूर्ये शशाङ्कयो जातस्य हि ध्रुवं मृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च अध्रुवेऽस्मिन् शरीरे तु रक्षणीयं यशा स्थिरम् ततो मे कल्पतां शीघ्रं गमिष्यामि रणाजिरे जयो वा मरणं वापि भवत्वद्देव दैवता इत्युक्ता सैनिकाञ्चुम्भो रथामास्थाय सत्वरा प्रयावम्बिका यत्र संस्थिता हिमाचले सैन्यं प्रचलितं तस्य संगे तत्र चतुर्विधम् हस्तस्वरथपादाति संयुतं सायुधं बहु तत्र गत्वा चले शुम्भा संस्थितां जगदम्बिकाम् त्रैलोक्यमोहिनीं कान्तामपश्यत सिंहवाहिनीं सर्वाभरणभूषाढ्यां सर्वलक्षणसम्प्रदां स्तूयमानां सुरेखस्थैर्गन्धर्वरक्षकिन्नरे पुष्पैश्च पूज्यमानश्च मन्दारपादपोद्भवे पूर्वाणां शङ्खनिनदं घण्टानादं मनोहरम् दृष्ट्वा तां मोहगमकचुम्बाकां विमोहिता पञ्चबाणहता कामं मनसा समचिन्तयत् अहो रूपमिदं सम्यग् महो चातुर्यमद्भुतं सौकुमार्यां च धैर्यं च परस्पर विरोधयत् सुकुमारार्ते तन्वङ्गी सद्या प्रकटयौवना चित्रमेतदशौ बाला कां भाव विवर्जिता कामकान्ता समारूपे सर्वलक्षणलक्षिता अम्बिकेयं किमेतत्तु हन्ति सर्वान् महाबलान् उपाया कोत्र कर्तव्यो येन मे वशगा भवेत् न मन्त्रा वा मलालाक्षी साधने सन्निधो मां सर्वमन्त्रमयी हेषा मोहिनी मदगर्विता सुन्दरीयं कथं मे स्याद् वशगा वरवर्णि पातालगमनं मे ध्यानयुक्तं समराङ्गणात् समदानभेदैश्च नेयं साध्या महाबला किं कर्तव्यं क्व गन्तव्यं विषमे समुपस्थिते मरणं नोत्तमं चात्रा शेषे कथं तो यशोपहृतं मरणमृषभिः प्रोक्तं सङ्गरे मङ्गलास्पदं यत्तत् समानबलयोर्योधयोर्युद्धतो किल प्राप्तेयं दैवर्जिता नारी नरसतोत्तमा न सा यस्मत्कुलस्य हे सर्वथा ते बला बला पिता किं सामवाक्यानि मया योज्यानि साम्प्रतं हननाया गता एषा किं नु साम्ना प्रसीदति नादाने चाल्तुं योग्या नानाशस्त्रे विभूषिता वेदस्तोऽपि बलाकामं सर्वदेवोपसानुगा तस्मातो मरणं श्रेयो न संग्रामे पलायनं जयो वा मरणं वाद्य भवत्येव यथा पृथिव्यासो वाच मनसा शुम्भा सत्त्वा स्थितो भूयत युद्धाय सुस्रो भूता तामुवाच पुरा स्थिताम् देवी दृष्टकान्ते द्यावृथायं ते परिश्रमा मूर्खास् किल नारीणां नायं धर्मा कदाचन नारीणां लोचने बाणा ध्रुवावेव सरासनं हावभाव सुशस्त्राणि पुमान् लक्ष्यं विचक्षणा सन्नाङ्गा सन्नाहस्साङ्गरा गोत्र रथश्चापि मनोरथा मंद प्रजल्पितं भेरी शब्दो नान्या कदाचन अन्यास्त्रधारणं स्त्रीणां विडम्बनं संशयं लज्जे भूषणं कान्तेन चादाष्टं कदाचन यद्यमाना वरा नारी करकसे वा विदृश्यते स्तनो संगोपनीयो वा धनुषाकर्षणे कथम् क्वा मन्दगमनं कुत्र गदामादाय धावनं बुद्धिदा कालिका तेऽत्र चामुण्डा परनायिका चंडिका मंत्र मध्यस्था लालने सुस्वरा शिवा वाहनं मृगरादासे सर्वसत्त्वभयङ्करा वीणानादं परित्यज्य घण्टानादं करोमि यत् रूपयवनो सर्वं विरोधी वरवर्णिनि ते संगरेच्छास्ते कुरूपा भवो भामिनी लंबोष्ठी कुनकी क्रूरा ध्वांसवर्णा विलोचना लंबादा कुरंदी च मार्जान्नयनाकृते एतसं रूपमास्थाय तिष्ठ युद्धे श्रावं कर्कशं वचनं रोहिततो युद्धं करोम्यहम् ईदृशीं सुदतीं दृष्ट्वा न मे पाणि प्रसीदति हन्तुं तां मृगसावाक्षी कन्दकान्तोपमे मृधे व्यासो भाति ब्रुवाणं कामार्थं वीक्षतं जगदम्बिका सुन्दरं वाक्यं उवाच भरतोत्तमा दिव्यो वा
किं विषेदसंबन्धात्मन कामवर्णा विमोहिता प्रेक्षिकामिस्ता मूढ़ा कुरु कालिकया मदम् चामुण्डाया वा कुर्वेते तव योग्ये रणाङ्गने हरस्व यथा कामं नाहं वा योद्धुमुस्से यद्धूता कालिकां प्राह देवी मधुरया गिरा जयेनं कालिके क्रूरे कुरूप प्रियमाहवे व्यासो वैदुक्ता कालिका काल प्रेता काल रूपिणी गदं प्रसे तरसा तस्थावाजो कृतोद्यमा तयो परस्परं युद्धं बभूवाति भयानकं पश्यतां सर्वदेवानां मुनीनां च महात्मनाम् गदामुद्यभ्यशम्भोता गदान् कालिकां रणे कालिका दयिता जानं गदया गहनदरसं मञ्जास्यारथं चण्डी गदया कनकोज्ज्वलं खरानद्वा जघानासूधारकं दारुणस्वना सावधा ते ग्रां गुरवीं समादाय क्रुधान्विता कालिका भजोर्मध्ये प्रसन्नहन तदा वञ्चित्तागदाघातं खड्गमादाय सत्वराजिच्छेदाश्रय भुजं सभ्यं सायुधं चन्दनाचितं साधन बहुरभृतो विग्रहपाणि प्रोता अचरेणा समागम्ये कालिकामाहनत् तदा काली चाकरबालेन भुजं तस्यास्य दक्षिणम् चिच्छेद प्रसन्ते सागतं किल साङ्गनं कर्तुं पादप्रहारं सा कुपिता प्रयोज्वाद काले चिच्छेद चरणो खड्गेनाशे दुरान्विता सा छिन्नकरपादोऽपि तिष्ठे शेते चाभ्रुं धामानो यावासु कालिकां भीषेण्यवतमागच्छन्तमालोके कालिका कल्पोपमं चकर्तमस्तकं कुण्डाद्रुधे रौघवहं वृषं छिन्ने सौमस्तके भूमौ पातगतिसन्निभा प्राणा विनुर्योस्तस्या देहादुर्गम्ये सत्वरं गतासुं पतितं दैत्यं दृष्ट्वा देवासवासवा दुष्टोस्तां तदा देवीं चामुण्डां कालिकां तथा गौरवादा शिवा सत्रादिशस्या विमलाभृतम् बहुवस्ताग्नो हुमे प्रदक्षिण शिखा सुबाहता शेषा देता प्रणम्ये जगदम्बिकां जगताधान्दे सर्वे पातालं यो प्रयोर्निपाय तत्ते शर्माख्यातां देव्याचितमुत्तमम् संवादीनां वधं चैव सुराणां रक्षणं तथा एतदाख्यानकं सर्वं पठन्ति भूय मानवा शरणमन्ते तथा भक्ता एकलाथा भवन्ते पुतो लभते पुत्राधनञ्चा धनं भो रोगे मुच्यते रोगाः सर्वकामवाप्नात् ततो नाभयं तस्य या इदं चरितं संश्रोतपर्यन्तं मुक्तिमान् जायते नरः। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणसंहितायां पंचमस्कन्धे एकत्रिंशां दशदेवजयवा महिमावर्णिता सम्यक् चण्डिकाया स्वयमनेकेनचारादिता पूर्वं चरित्रस्य योगता प्रसन्ना कस्य वरदा केन प्राप्तं फलं महदाराध्ये कामदां देवीं कथयश्च कृपानिधे उपासनाविधिं पुनस्ता पूजाविधिं वद विसरण महाभागा होमस्य च विधिं पुनः सूतो वाचमुपचपासरुता प्रीता सतपतिस्ता भृत्वाचानपं कृष्णो महामाया प्रभोजनं व्यासो वासो रोचिषे नरे पूर्वं सुरतो नाम पार्थिवा बभूव परमोदारा प्रजापालन तत्परा सद्यवादे कर्म परो ब्राह्मणानां च पूजका गुरुभक्तिरतो नित्यं सदा गमने रता दानशीलो विरोधे च धनुर्वेदैकपारगा एवं पालयतो राज्यं प्रेक्षा पर्वतनाशिना बलाचत्रुत्तमापन्ना सैन्यं कृत्वा चतुर्विधं मत्तस्य रथपादाति सहितास्ते मदोत्कटा कौलविध्वंसिना प्राप्ता पृथ्वी ग्रहण तत्परासुरथा सैन्यमादाय सम्मुखा सम्पद्यते युद्धं सम्भोधघोरं तस्य तैरथदारुणे म्लेच्छानां तु बलं स्वल्पं राज्ञस्तद् बलमद्भुतं तथापि तैर्जितो युद्धे दैवद्राजा पराजिता भग्नश्च स्वपुरं प्राप्ता सुरक्षं दुर्गमण्डितं चिन्तयामास मेधावी राजानीति विचक्षणा प्रधानान् विमना दृष्ट्वा शत्रुपक्ष समासतां स्थानं गृहीत्वा विपुलं परिखा दुर्गमण्डितं काला प्रतीक्षा कर्तव्या किं वा युद्धं वरं मदं मन्त्रिणा शत्रुवशगा मन्त्रियोग्यानते किला किं करोमीति मनसा भूपति समचिन्तयत् कदाचित्ते गृहीत्वा मां पापाचारा पराश्रिता संवत्सुभ्योऽथ शत्रुभ्योऽथ प्रदास्यन्ति तथा किं वा भविष्यति स्वाबुद्धिषु विश्वासो न कर्तव्या कदाचन किन्ने ते वै प्रकुर्वन्ति ये लोभशगानरा भ्रातरं पितरं मित्रं सुहृदं बान्धवं तथा गुरुं पूज्यं द्विजं ज्येष्ठी लोभाभिष्टा सदा नरा तस्मान् मया न कर्तव्यो विश्वासा सर्वथा धुना मंत्रवर्गे पापिष्टे शत्रुपक्ष समाश्रिते
इत्सञ्चन मनसा राजा परम दुर्मनायकाकी रथमारुहेन्द्रगाम पुरा तथा सहायुत निर्गत्य गहनं वनमाश्रिता चिन्तयामास मेधावी क्वा गन्तव्यं मया पुनः योजनात्रये मात्रे तु मुनिराश्रमोत्तमं ज्ञात्वा जगाम भोपालस्तापसस्य समेधसा बहुवृक्ष समायुक्तं नदी पुलिन संसदं जलभैरस्वापता किरणं कोकिलारावमण्डितं शिष्याध्ययन शब्दाढ्यं मृगयूत सदापतं निवारान्नस्वकड्ढं निवारान्नस्वक्वाढ्यं पुष्पफलपादपं धूम धूम सुगन्धेन प्रीतिदं प्राणां सदा भेदध्वनि समाक्रान्तं सर्वादपि मनोहरं दृष्ट्वा तमासरं राजा भूवादो मुदान्विता भयं दग्धा मतिं चक्रे विश्रामाय द्विजाश्रमे आसच पादवे स्वं तु जगामाभिनयान्विता दृष्ट्वा तां मणिमासीनं शालाच्छाया संसतां मृगाजनासनं शान्तं तपसा ते कृशं युजं अध्यापयन्तं संश्चासा वेदशास्त्रार्थदर्शनम् रहितं क्रोधलोभादे नन्दातीतं विमस्रम् आत्मज्ञातं सत्यं वादनं संयुतं तं वीक्ष्य भूपतिर्भौम पाददण्डवत्तदा ततग्रे सुजलापूर्णा नयना प्रेम संयुता तुतिष्ठोतिषबद्धं ते तं वाचे धामनि शिष्यो ततोपसीं तस्मै गुरुणानोदितसा उद्धानवदशां समासीन तदाज्ञापाधारणं चक्रे सुमेधा विदूरकं पदप्रच्छात्र पप्रच्छाद कृता प्राप्ता कस्तुं चन्दा परा कथं कथयश्व यथा कामं सम्मतं कारणं ते क्रियागमनं कृतं ते ब्रूहि कार्यं मनोगतं करस्य वासितं काममुसाध्यमपि यत्तव रामो राजो वा जो नाम राजां सुधविश्चा पराजिता त्यक्ता राज्यं गृहं भार्यामहं ते शरणं गतः यदा ज्ञापयसे तदहं भक्ति तत्परा करिष्यामि न मे त्राता तदन्या पृथ्वीतले शत्रुभ्यो मे भयं घोरं प्राप्तो स्मध्ये तमान्तिकं त्रास्व मनुषा दूलाशरणागतवत्सलारिसुभाजं निर्भयं वत्सवाजेन्द्र तदते शत्रवा किला आगमिष्यन्ते राजे बलिनो निश्चयं तपसो बलात् नाथेन्सा प्रकर्तव्यापनिवृत्तानि भूतमा कर्तव्यं जीवनं स्थैर्य निवार फलमूलके व्यासो वायतस्विचाश्रुता निर्भयासा नभसदा वासाश्रम एवासो फलमूलस्नाकुचितं कदाचित् सत्र छायां समार्ता चिन्तयामा चिन्तादोग्रे एव गताशया राज्यं मे स्त्रुभिस्मातुं ऋषि पावते सदा प्रविष्टास्ते लोकास्ते दुराचारे गततपे गजाश्च दुर्गा सर्वे दुर्बला भक्षभरिता जाता सूर्यनात्र सन्देहा सत्ता परिपीडिता सेवकां सर्वे ते शत्रूणां वशवर्तिना दुःखिता एव जाता सुपालिता ये मया पुरा धनं मे सुदुराचारैः सद्भे परैश्वरैः मे दूत सभा भुजिष्यादिस्थाने सात् प्रापितं किला सक्षं करिष्यन्ति व्यसनैवा बुद्ध्या तपात्र न पात्रदान् निपुणां लेक्षा सेमलोपि मे ते जन्तापरो राजा वृषमूलासितो दासो वैसदो कदा कस्यदार्पित कस्यदाते परसदार्पेण प्रतो दृष्टा भाषे ततो वेशयता पृच्छतं नृपाकोशे कुतुरेवातो वनं कोशे कस्माच्च दीनोषि हरणाशोकपीडिता ब्रूहि महाभागा मैत्री साप्तपति मदा व्यासो वाचनं नागसमुवाचा ज्योतिषोत्तमा विश्वेश्वरो भूता मत्वा साधु मनागसं मध्वा साधु समागमम् वैश्य उपाधिमित्राहं वैजातीया समाधिर्नाम सुधा धनवान् धर्मनिपुणा सत्यवागन सूयकापदास्तोहं नलुदैरसाधुभिः कृपणे तेम संकृता तक्ता मायां सुधां सुनेन चास्ति जगदा प्रातोन्मास्वे कोशि त्वं भाग्यवान् भासि कथयस्व प्रयाधुना राजो वासुतो राजाहं दशमे पीडितो भानतो शेखराजोतामद्भे परिपञ्चता दृष्टा तमत्र मित्रं मेलितोषे विशोत्तमा सुखेन विहरिष्यापनेत्रा शुभपादपे शोकं त्यज महाबुद्धे स्वस्वभयोसमात्रे उचाधाम सुखं तेषां मया सा वैशोभागं मया हीनं सुलोकितं भविष्यन्नाचिन्तातं व्याधिशोकोपतापितं भार्यादेः सुखं नो वापतदेः न वा सुखम् इचिन्तातं चेतो नामेष्यामति भूम्पा कदा दक्षे सुतां भाजां गृहं स्वजनमेव च स्वस्तं नमन मनोराजन गृह चिंताकुलम भस्मराजो भाग एस्तो से पुत्रादेश बाल से तान दृष्टा सत्यम सुगम ते दया भविष्यति महामते यदि कार्ये बलादो दुग्धासो दाकृताम तस्मात् सम्मना कृता विहरस्व मया सा वैश्योवाच मनो नामेधास्त्रं राजन भवत्यद्य सुदुःखितं चिन्तयात्रा कुटुम्बस्य दुःसजस्य सुदात्मे राजोवाचमापि राज्यजं दुःखं दुनोति किल मानसं पृच्छावोद्य मुनिं शान्तं शोकनाशनमौषधं मया शोभायत कृता मुनिं तौ राजा वैश्यस्य जग्मधो मुनिं तौ विज्ञापयतो द्रष्टुं शोकस्य कारणं गत्वा तं प्रणिपत्याः राजा समुद्रं रासेनं सम्यगासीना शान्तं शान्तभागता श्रीमन्दे भागवते महापुराणे पारमहंसां संगतायां
पंचमस्कंधे धात्रिंसां तत्सद राजो वा मने वैश्व मुदना मने मे विदराम गदावधारे स्वयं प्राप्तो ततम संगमा कुटुंबा वीरहेणासो दोखितो जीवतरमनाना स्मायाते साधतां सांप्रदं गदाज दुखेन शोकादस्माप्ते निष्कारणं च मे चिन्ता दैरान्ना निवर्ते अयामे दुर्भ्रास्योगं गजाशत्रुपसं गता वृतवर्ग साधुकी जाता तो मया विना को सक्षम करिसन्ति रिपोति बलात् क्षणादं इत्यं चिन्तयान शेष न मे निर्दासनो सुखम् गालावीतं जगन्मिथ्या जगत्सप्नवत्सर्पमेव हि जानतोऽपि मनोभ्रान्तं नायसरं भवति प्रोकोऽहं केश्वा गजाके मे न ते मे च सहोदरा न पुत्रा न च मित्राणि येषां दुःखं नोति मां ब्रह्मवदेव जानामि तथापि मम मानसा नैवापसरते किं तत्कारणमद्भुतं साम्यस्तमसे सर्वज्ञ सर्वसंशयनाशके कारणमोहस्याभ्यामस्य जादयान्धिं व्याजोपायतप्रसादाज्ञासमेधामनिसत्तमात्मवाचा परं ज्ञानं शोकमोह विनाशनम् नरसुरवाच सुरनराजन प्रवक्ष्यामि कारणं बन्धमोक्षो महामायति विख्याता सर्वेषां प्राणिनाम्य ब्रह्मा विष्णुते साना तथा साडवर्णो नीलः सर्वे देवा मनुष्याश्च गन्धर्वोदकराक्षसा वृक्षाश्च विपदावल्यापशो मृगपक्षिणा मायाधीनस्ते सर्वे भाजनं बन्धमोक्षो तथा श्रेष्ठामृतं सर्वं जगत्सापर्जङ्गं दत्सेत्वते नूनं मोहजालेन यन्त्रं किं दया मानुषे स्वेका शक्तिर्सा बिला ज्ञानापचेतांसि मोह यद्य निसम्मिसा ब्रह्मेशा वासुदेवाद्याकारे रागसाल्लोके भ्रमन्ते पदे मोहिता द्रोता सिद्धुके राजन विष्णु नारायणाशं शतद्वीपं समासाद्ये चकार विपुलं तपः वर्षाणां महितं जातपरं विद्या प्रशक्ते अनश्वर सुखायासो मंत्र चिन्तया न सदा परम् एकस्मिन् देशे ब्रह्मापि परमाद्भुते ऐसे तपस्य राजेन्द्र मोहस्य वनवर्ते कदादिवासे वोषो सलान्तरमतिर्हरि तस्मादेशा समुद्धाय जगामानाध्यक्षातर्होदे राजेन्द्र देवनेशासलाता मिलतो मार्गदयतो चतुर्मुख चतुर्भुजो अन्योन्या पृष्ठवन्तो तो कस्त्वमिति स्मृता प्रभावजातं देवं करताहं जगता किला पृष्ठमा भूमूर्ख जगत्कर्ता अहमच्युता तं क्रियान् बलहीनोऽसि अजो गुणसमार्ता सत्तास्तं हिमां विद्धिं वासुदेवं जनार्दनं मया तुमरचितो दैव कृता युद्धं सुधारणं शरणं ते मे समायातो दानवाभ्यां प्रवीर्ता मयादौ नेतो कामं दानो मधुगैर्भो कथं गर्भायसे मन्दा मोहोऽयं तेषां नामत्तो व्यधिका कश्चित् संसारेऽस्मिन् प्रसारिते सुवाच एवं ब्रह्मानोदो ब्रह्मविष्णुमानव लोहिताशो भूतो भ्रातुर्भुव साक्षादयोरभिवदयमानो मध्ये लिङ्गं सुधाश्वेतं विपुलं दीर्घमधुनं नागासे तरसा तत्वाग्वाचा श्रेणी दोषं भवति महाभागो विवदन्तो दोरस्मृतं मानविष्णो विवादं सा कुरुता मां परस्मृतं लिङ्गस्य मां परापारमधः सदुप मदस्तादुपरिश्रुवम् लिंगशास्य परंपारा मदस्तात् परिध्रुवमयोर्मध्ये सा श्रेष्ठो वांसदेव एका प्रयातोपातालामागासामवरोधुना पुराणं मे विचाकारं त्यक्ता वादं निरर्थकं मध्यस्था सर्वदा कार्यो विभातेऽस्मिन् द्वयोरिह सर्वाच तच्युतापतनं दिव्यं सज्जीभूतो कृतोद्यमो न सर्वतो माधवग्रस्तं लिङ्गमद्भुतदर्शनं पातालमदे विष्णु ब्रह्माभ्याकाशमेव चापरे मातुं महालिङ्गं स्वमातवृतेन्द्रग्रे देशं शान्ता सर्वात्मना यतः नापापान्तं सलिङ्गस्य प्रवृत्ते स्थलं ब्रह्मागतः ततः सौरसम्पदितं केतकीदलं शिवस्य मत्स्य प्राप्य परावृत्तो आगते सा प्रथमा विस्मये केतकीदलं दृष्टा च विष्णुं उवाच मनोहितालिङ्गस्य मस्तकामे तत् क्रीतं केतकीदलं ब्रह्मज्ञानाजानिन्दं तव चित्तप्रशान्तये श्रुत्वात् ब्राह्मणो वाक्यं दृष्टा च केतकीदलं हरिस्तं प्रतिभाषेतं साक्षी काकतया धुनाथवादे मेधावी सदाचारा सुधीमा साक्षी वो सर्वपत्राभादे सम्बुद्धे ब्रह्माजा धुर्देशा समायाति साक्षी का समेधना यत् सत्यं तद्रासेयं केतकी कथयश्री तक्तात् स ब्राह्मणा केतकी संभद्रं प्रातरसा साङ्गिरं प्रतिबोधयत् सा ब्रह्मा गृहीता मां समागतः सन्देहोऽत्र न कर्तव्यास् शोकदासा वाक्य ब्रह्म पारंगतोस्य सातगातं समातं विभक्ते स्मरतं केतकासं सुधारिता समन्नामहादेव प्राणं वेद सो वचनं वेद सुवाच
तथा कर्णे हरेर्वाक्यं महादेवा सनातना कुपदागे किं ब्राह मिथ्यापादन मावधागस्तो मध्यता प्रातास्ता नमस्कान् मिथ्याभाषणे प्रक्ता मया तं सर्वदैव हि लज्जा प्रोभूता नामसोदनं द्वेन केतकी तक्ता प्रत्यत्कस्मा कुस्मेश्वे यम्माविलम्ब्य देगान् नामोदं तन्नेषां प्राणां राजन् का वार्ता पुरं प्रति देवानां कारसिद्धं तदेव महापतिं दैत्यान् वञ्चे देशासु त्यक्ता पापयं हरिरागारो अवतार करो देव दानाय स्मार्तानन्दामुखं त्यक्तानन्द सुखं जयतरयुद्धं जयवा करोद विभो मायाबलं जयधनमाधवे जगद्रो सर्वज्ञे देवकार्यांसि गाभातान्यस्य भूपदे ज्ञानं चेतांसि परमावगति कृताबलादाकृष्यमोहाय रक्षति महीपदे याव्यातं सर्वं भगवद्याचराचरं मोहदा ज्ञानदा जयबन्धमोक्षापदा सदा भगवान् राजो भगवन्मयमेतश्चास्वरूपं परमुत्तमं तत्प्रतिकारणं धापे स्थानं परमकं जयत विसर्वाजानो जो तद्वेदनादित्वा नृपाकर्षा कदाचनानि देवशापरा देवी कारणानां च कारणं भवते सर्वभूतेषु शक्तिः सर्वात्मनानि सर्वशक्तिस्य हीनस्तो प्राणे भवति सर्वथा शक्यते सर्वभूतेषु रूपं तस्यात् देव हि धापिर्भातिरो भावो देवानां कार्यसिद्धये एदास्वन्ति तां देवा मनुजा चापि साम्पते प्रदोभन्ते भूतानां दुःखनाशाय चाम्बिका नवधा देवी जानासि समन्विता न भवति कार्यार्थं स्वच्छा परमेश्वरी देवानाथादपि सर्वे सुता नित्यं पुरुषाः प्रवर्तने दकारा पुरुषो भ्रष्टा दृश्यं सर्वमिदं जगदस्य जनीसेवा देवी सद्नाका संजयन्त्रेका कर्ता ब्रह्माण्डाकं ते पुरुषे सर्वं संहरत्यते संहसादया निमित्तभूतासे ब्रह्म विष्णु महेश्वरा कल्पिताशुष्कारेषु प्रेरिता लीलया त्वमी श्वांसं तेषु समारोप्य कृतास्ते बलवत्तरा दत्ता चासक्तयस्तेभ्यो लक्ष्मीन् गिरिजा तथा ते तां ध्यायन्ति देवेशा पूजयन्ति परां मुदा ज्ञात्वा सर्वेश्वरीं शक्तिं सृष्टिस्थितिविनाशिनीं एतत्ते सर्वमाख्यातं देवी माहात्म्यमुत्तमम् ममोध्यानुसारेणानान्तं जानामि भूपते श्रीमद्दे भागवते महापुराणे पादम् अष्टादशं पंचमस्कन्धे श्रीराजोवायुं भगवन् दर्शाराधने विधं भोजनोक्षामि दर्शा पूजा विधं स्वं कामनं मोक्षं नाम सरयं लोकनाशनं दादोषां कृतासुदेशुलां प्रोनाशन्य प्रयताकृता सोमायतनं फलितभूम्यां तो संस्थाप्यासनमुद्दं तो विषय विविधता सुजामे दानं दातदातं संस्थाप्य ध्यासक्त्यनुसारतः प्राणजागृता भूषितिं विधाय जागृता प्राणदशां तो संवादं प्रोक्षमन्त्रता कालज्ञानं जागृता नाशं कुर्यात् तथा विधि शुभे ताम्रे बाते चन्द्रेण सितेन च षट्कोणं विलिखेद्यन्त्रं चाष्कोणं ततो बहिः नवाक्षरस्य मन्त्रस्य बीजान् विलिखेत् तथा कृता मन्त्रप्रतिष्ठां च वेदोक्तां संवेदाय च तेन कुर्यात् पूजा मंत्रे शिवोदते पूजनं पृथ्वीपाला भगवत्या व्रतता कृत्वा च विधिवत पूजामागोक्तां समायतात् भिन्नाक्षरं मन्त्रं सततं ध्यानपूर्वकम् ओम दशांसा कुर्यात् दशांसेन च तर्पणं भोजनं ब्राह्मणानां च तदंसेन कारयेत् तत् चरित्रते पाठां च नित्यं कुर्यात् विसर्जयेत् नवरात्रं च विधेयं विधिपूर्वकं दासने च तस्य शुक्ले पक्षे नरातिभानो रात्रो वासो वे कर्तव्यासं विदिता ओमादपुलाकारो जपमन्त्रे सुभाषे सर्गराते मित्रैश्च मधुयुक्ते सुसंस्कृते नगमासेन वाकारो बिल्वते शास्त्रे हरिकस्मै धैर्वासुदातं अष्टाम्यां च दशाम्नोम्यां च विशेषताकृतं पूजनं देव्या ब्राह्मणां च ब्राह्मणानां च भोजनं नाप्नोति रोगे रुगात्मोचते उतो वृत्ते पुत्रांश माचापस्वदनाम् आप्नोति राज्यं नाप्नोति सार्वभौमं सद्वे पीठो वन्दे रूपं माया प्रसादाब्जाते पूजनं तो करोतीन्द्रियाणां विद्यां संविद्यां तेनात्र संशयः ब्राह्मणाजय द्रौपदीशासूतो अग्नितापुजे चक्रां धातिं सर्वसुखभागवेदं रात्रं कुर्यान् नरनारीगणश्चयः नवरात्रं कुर्यान् नरनारीगणश्चयः वाञ्छनं फलमाप्ति सर्वदा भक्तदा आधुनिकदेशानोत्राप्तं स्वाप्राते भावसंयुक्ता सर्वान् कामान् वाप्नात् अभिनन्दनं कृत्वा पूजा सानं वेदमन्त्रविधानता स्थापयति कलशोपरि स्थापित यथा शारूपासुता परिवर्तनान् कृतोपदानं जापस्माला समापदान उल्लेपधोपदीप संयुक्तं कर्तव्यं चण्डिकाग्रहं त्रिकालं तत् कर्तव्या पूजा सक्तं साता विशासं कर्तव्यं चण्डिकायास पूजने दुपे वेदे फलपुष्पे नेक्षागतपादे सोत्पादे वेद पारायणे सा उत्सवत्र कर्तव्यो नानावादित संयुते कान्तिकानां पूजनं चापिधेयं विधिपूर्वकं सन्ने भूषणे वस्त्रे वक्षे च विदेशा सुगन्धे तैलमाले च मनसो जगार्गे
एवं संपूजनम कृत्वा मंत्र विधानता समाजरम्या जाकारम धारण भोजे भासात भारन दशमी दिने कथम सक्रोदानम देव भक्ति भय यायम कुरते भक्ता धनुरात्रापतुनान हरिव सदा भक्त्या विद्वाभापतिपदा ए लोके सुखमदाना प्राप्ते मनसेवसादे यहाँ देवरोस्थानं प्राप्नुवन् प्रार्थनां देविका भक्ते भवत्या विचारणीं मतं कुले प्राप्य साधो विद्यानुरातं मोक्तं प्रधानां त्वं परं व्रतम् आराधनं साधु सर्वसौकरं ब्रह्मादिनाभिसनाजान् समाराधे साधुं सात्वं रास्य जन प्राशस्य नन्दध्वं त्वजा ब्रह्मभूतं देहेस्मिन् गृहे पुनः संसारां समासाद्या संस्या वैश्योत्तम तुम्हें राजा समाराधे कामनां देवीं विशेषरीं मायां से संगारकारिणीं नजनानां सामान्यस्त्वं भविष्यस्य गृहे गता सुखं सांसारिकं प्राप्ता यथा भृष्टं पुनः द्रवि लोके सुखे वासो भवतानि दर्शन्ते न संस्यानान्ता भगवति यत्ते भागिनानि लोके दुःखातानां लोके प्रवृत्ता भवन्ति मानवाता शतभिस्सहस्राजां देशकलत्रा निष्कलत्रा पुत्राजा दर्शनाथा स्तब्ध बुद्धया बलवे मृदले करैर्वीरे सद्पुत्रैः संभगे जगतां धाति जैसे जीव बलासना वन्दे कर्मण्यादे भक्ति शक्ति परायणः सखाद्या मानवा मानवस्ता सकल गुणगणानां भाजनं भारतीशानुगवर्तमन्त्रे पूजिताय भवानी नवतिलक मुख्यासे भवान् मुख्यासे भवन्ते लोके निपतिलक मुख्यासे भवन्ते लोके महापुराणे वन्दे संसां दशद शोभाय दशभुजाश्रुता दुःखदो ऐशभारतो प्रणपत्यामृता प्रस्यावन्तोपदम् अजबुल्लेना उचितुर्वाक्यो विदोषान्तो भक्ते प्रणोजेशो भगत भगवन् पाविदान् मध्या संसावधेनो सुदान् विदोषो सरस्वत्या गङ्गे एव भगीर्था साध्वासं भवन्ति या परोपकृत तत्परा आगतमागुणानामा सुखदा सर्वदेनां पुण्यप्रसङ्गेन प्राप्तो यमा शर्मा शुभाभ्यां महाभागा महादुःख विनाशका भवन्ति मान भावो भावासा तत्परा परासाद निरसा केशुकाभि भवादसा गुरुत्वं मनशेषा वैष्णवं जात लोकिता संसारं प्रेमदा दर्शनारे विद्वनगतं दुःखमिवाय मिहावयोः देजं मानसं वाक्ये शृण्वादेव साम्प्रतं धना धन्यावां कृतवतो जातो साधं पावतो भागवता ब्राह्मण गर्भयाणवा ग्रहणात् ग्रहण स्मत्करो साधो नयपारं वाणे मग्नो शान्तावधे ज्ञातामृतानि साम्प्रतं तदा कृतादि विपुलं समाराध्य सुखप्रदां सम्प्राप्तस्ने भूयस्यावो निजमन्त्रं ददातो वसम्प्राप्य देवेन्द्रं समाशं ग्रन्थापरिस्यावो निराहतो दब्धो देशोपाभ्यां मेधामनिषद्मां तोमन्त्रं सोमताभ्यां ध्यानबीज पुरासनं ततो चाप्राप्य मुनिर्मन्त्रं सम्मन्त्रतो वसन्तो वैसा राजानो वैदरमन्त्रं निगान्ते विनिशाने कृतासने घनपुष्टो भगवतापति मंत्रजापदो शांतो चतुर्थे पाठको संतो मासमेकं तो तत्र ध्यानपरायणो ततो मासापदेनेवो जाताभिर्मातां जे भवन्यासो इस्रावधावलं राजतपादोतामनेशस्य महात्मागत प्रणामं भागत्य तस्तुश्चाक शासनेनान्य कार्यभो भापि भवतु कदाचन पुनरुत्तम जवन्ता दोषधा भ्रमणिता संवत्सरेण भाव उतोपलाहनं जगता वर्णासनो निपापरिकं तपस्त्रात् तुरुवैश्यपातो सुवर्णासनो दान्तो जप ध्यानपरायणं पुण्य वर्षद्वे जाते कदाचित् दर्शनतो प्राप्तो मध्ये तु भोगत्या मनोरमम् मनोरम रक्तामृतराम विचारभूषण भूषतां गजातिन प्रदेश स्वप्ने जगदं स्वप्ने पश्यन् जगदं विगाम् तो देवी मृदुक्तो भवतो लारे ते दोषतो संवत्सरेतुं मदं कृता मदस्तो वैश्यपार्थो वदस्तो तथा चिन्तां चित्ते दर्शनलालसो दक्षं दर्शनादेव दर्शनं देव्या प्रातुं साधं नामादेहदोषतो समातो संसा राजा कुण्डं चकारः त्रिकोणं सुतं सौम्यमस्तमात्र प्रमाणतः संस्थाप्य यावकं पावकं राजा तावेशोद्भक्तवान् दासोन्यमासं चित्ता सिद्धा पुनः पुनः तथा वैश्योपि दीप्तयज्ञो समांसं प्राक्षपदता उदयनाबलं चाशेदसो क्रोधमो तथा भक्ति दत्ता दक्षं दर्शनं द्वं प्राविदित भरोद्भ्रान्तो दृष्ट्वा तौ दुःखितो संवाच परम्परे भूराजं यत्ते मनसि वाञ्छितं दृष्टां तपसा ते भक्तोषितं मतोऽहं वैश्यं प्रादादेहं प्रसन्नाहं महापते तेभीष्टं ददामि किं तेभीष्टं दाम्यते प्रार्थयासो मनोगतं व्यासोवाच दत्तावचनं राजा तं वाचावधानं दादेहमेते निजं राज्यं सोबलं बलादादेहं गच्छ राजं निजां गृहं तत्त्वासीन सत्तासे गमिष्यन्ते पराजिता मंदरासे समागम में देवसंध राज्यं महाभागा नगरे नगरे सौम्यथासुखं कृत्वा राजं सुबलं वर्षाणां महितं भादे हान्ते समताभ्यास ऊर्जा च विधामनो व्यासो वैशास
वैशस्तामप्यवाचेदं कृताञ्जलिप्रदासेन मे ग्रहेण कार्यं मे नापुत्रेण धनेन भागसम्बन्धः करं माता सप्नव न स्वरं स्मृतं ज्ञानं मे देविस्तं मोक्षदं वन्दनासनं सारेऽस्मिन् संसारे मूढामज्जन्ति पापरापण्डिता सन्तरन्तिः तस्मान्नेशं सरतं राजो वादसागरे महामायं वैशं प्रापुराजं वैश्वेदो ज्ञानं विष्णुतं जातद्भावं ताभ्यां तथैव दर्शनं गतां दो राजातं सतमाप्रणम्य मारुहे गमनाय मनोधे तदेव तस्य श्रीवात्मसागतेन प्रजा प्रणेमो भेदा प्रांजलि वासर भेदपच नेतारणे राजमृगं सुता पुरुषा पुरुषमाता दुतापदनं राजा सख्वा नत्वातं सतमो यत्र मन्त्रिभिः परिवार्ताः सम्राजानं राजं धारान् स्वजनबन्धवान् भुजे प्रेम सर्वां ददा सागरमेखलाम् वैशोभिज्ञानमाशाद्यामुक्तसङ्गा समन्ता कालादिवानं सा मुक्तबन्धः जगारः ते भजन गायन भगवता गुणार्था ते तं देव्याजतं परमार्थं साधारणफलप्राप्तिरेतावन् भूपवैश्यो नम् प्रोक्तं साधुर्वा सागरो देवी भक्तानामय प्रदा येषुनो निमेदाख्यानोदं समाधं संसारसुखमदं जानमोक्षं सेवाकीर्तं सुखतं तापावनं सर्वानुनेदाख्यानोदम् अखिलाटं अखिलार्थपदं नृणां सर्वधर्मसमावृतं धर्मार्गां मोक्षाणां कारणं परं मदं रसोपाचनेन राग्यसो पृष्ठादुपदेशावासङ्गतां दिव्याम्याशादुपादं दण्डिकायादोदमुदयदेवदासं दादामाधवानकृष्णाकारणिकोमनेद्वागतं सारा प्राणामनीश्वरासिदेवाकुते महापुराणे पारं स्कन्धे पंचदशां तत्सत् अक्षरं परं रष्टं मात्राहीन